So I want your complete attention now. Look at me. So yesterday we had a discussion about the initial part of the chapter and we said, and give the answers loudly and in one voice. How many types of data are there? And what are the three types of data? Raw data consists of what? Observations. Small n is the number of observations. Second type of data will be what? Ungroup means discrete frequency distribution. इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो तुम फेल हो ही नहीं सकते. फिर third type of data would be what? Grouped or continuous frequency distribution. And in both of these frequency distributions, frequency की total होती है वो होगी capital N, that is sigma f. Then classes are of how many types? And what are the two types of classes? Inclusive classes and exclusive classes. Exclusive classes exclude upper limit. So 0 to 10, 10 to 20, these are the exclusive. But 0 to 9, 10 to 19 will be inclusive. Exclusive classes are also called overlapping classes. And inclusive classes are also called And then how do we convert inclusive classes to exclusive classes? Subtract 0.5 from the lower limits, add 0.5 to all the upper limits. Then the converted classes will have boundaries. And the original endpoints are class limits. Then tell me mid value or class mark is what? Upper limit plus lower limit or upper boundary plus lower boundary over 2. Class width is what? Upper limit minus lower limit. Then relative frequency is equal to what? That is frequency divided by total frequency. Then frequency density is equal to what? Upon the width of the class. And total of relative frequencies is equal to what? We then said that there are two types of cumulative frequencies. What are the two types of cumulative frequencies? Less than cumulative frequencies are less than what? Less than cumulative frequencies are less than what? Upper limits or upper boundaries. And more than cumulative frequencies are what? More than lower limit or lower boundary. And less than cumulative frequencies are found by taking the totals in the downward direction. And more than cumulative frequencies are found by taking the totals in the upward direction. And then less than cumulative frequency of one class and more than cumulative frequency of the succeeding class, matlab next class, will add up to what? Total frequency. That was one MCQ. Then 𝐂𝐥𝐺s are how many types? And what are the two types of 𝐂𝐺𝐺s? Less than 𝐂𝐺𝐺 and more than 𝐂𝐺𝐺. Now the 𝐂𝐺𝐺 is what shaped curve? And then what could you say about the median? How do you find the median? Abscissa of point of intersection of the two 𝐂𝐺𝐺s. That abscissa is nothing but the median. यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था and then यहाँ हम कल रुके. समझा? तो कल जो almost 1.5 hour में किया था वो 5 मिनट में रिवीजन हो सकती. And this is how you have to continue revising the concepts time and again. Anyway, now look at me. Now look at me. I ask you that suppose if I consider income below 500, below 1000,
below 1500, below 2000, below 2500, and the number of people is, suppose 17, 42, 86, 125 and 150. Find the number of people having the income above rupees 2000, I ask you, find the relative frequencies. A very typical question. Typical is very classical question. तो पहले क्वेश्चन को लिखो and then we shall discuss this. A very classical question. Over. Now my question is, just try to understand what the information has been given here. क्या information दी है उसके तरफ देखो. Tell me what is given. Income below 500. Income below 1000. Income below, बोलो ना. Income below, तो फिर इस डेटा के तरफ देखो और फिर मेरे को बोलो. Look at these data and then tell me. Tell me that suppose if I consider this income level 500, 1000, 1500. My question is, tell me below 500 means where will these people be? Where will these people be? They will be somewhere up till 500. Samjha? How many people are there? How many people are there? 17. Now below 1000 will mean what? Below 1000 में क्या होगा? Below 1000 will include 0 to 500 as well. So below 1000 मतलब पूरा left होगा. And such how many people are there? 42. Now if this is true, tell me in this interval how many people will be there? You understand my point? Those who are below 1000 are obviously having the people who are below 500. Below 500 के people below 1000 में आएंगे ही ना, definitely. And therefore below 1000 if there are 42 people, then 42 में से 17 people are below 500. So in this interval how many people will be?
will be 42 minus 70. समझा क्या नहीं तुमको? फिर my question to you is tell me below 1500, below 1500 मतलब ये पूरा, and below 1500 how many people are there? 86. तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ उसमें से इतने ये जो लोग हैं 42 people they are all below 1000. तो 1000 to 1500 में कितने लोग हो? बोलो ना. 1000 to 1500 में ये इस इंटरवल में कितने लोग हो गए? तो दैट विल बी 86 minus 42 जो भी होता है. क्या क्या तुमको? So whenever they are talking about below, what it means is that these are the less than cumulative frequencies. And then how do we make the frequencies of them? I consider the frequencies of them by taking the differences in the downward direction. तो इसका मतलब क्या हो गया कि below 500 that class is going to be 0 to 500, then 500 to 1000, then 1000 to 1500, then 1500 to 2000, then 2000 to 2500, 2000 to 2500. समझा ना तुमको? So tell me what will be the frequencies. अभी जो below 500 है वो all these 17 people are there between 0 and 500. And therefore 17 people would be here. Now tell me below 1000 how many are there? 42. तो यहाँ 500 to 1000 में कितने लोग आएंगे? That will be difference 42 minus 17 and that is equal to what? 25. Then tell me below 1500 how many people are there? 86. तो ये इस क्लास में कितने लोग आएंगे? It will be 86 minus 42. Whatever the difference comes. Then my question is below 2000 how many people are there? 125. So these are what? 125. So 125 में से 86 earlier हो गए हैं. So this number will be 125 minus 86. And below 2500 there are how many? 150 people. तो ये frequency होगी 150 minus 120. तो ना एक बात समझने की कोशिश करो कि यहाँ तुम्हें नोट लिखना है और वो नोट ऐसी है कि whenever they talk about below, whenever they are talking about below, these are the less than cumulative frequencies. These are the less than cumulative frequencies and therefore take the differences in the downward direction. Take the differences in the downward direction. And now tell me what these frequencies are. 86 minus 42. This is 44. 125 minus 86 will be what? 39. And this is equal to what? 25. Is that clear? Say yes. कहो ना समझ गया. Now tell me income above 2000, which people will be there? Income above 2500, which will be 2000, which people will be there? So when you say income above 2000, it would simply mean that you want the people between 2000 to 2500. And such how many people are there? 25. Then my question is, tell me capital N is sigma F and that capital N sigma F is equal to what? Total कितना है? 150. तो relative frequencies क्या होगी? How do you find the relative frequencies? That is the frequency divided by total frequency. So tell me what is that? It will be 17 over 150. This is 25 over 150. This is 44 over 150. This is 39 over 150. And this is 25 over 150. That is how you find the relation. ये below जब कहते हैं, because this is very popular type of example. This is very much favorite for the paper setter. And what paper setter loves?
He also had to love. The paper setter loves his daughter. Over now. Over. And of course, sum of relative frequency is bound to be equal to what? 1. I give you one more question and you try it on your own. Marks and the number of students. Marks and the number of students. Marks about 10, about 20, about 30, about 40, about 50, and the number of students 100, 86, 70, 42, 10. First start. Find the number of students. Find the number of students between 30 and 50. Second, below 30. करो बाळांनो. And then find the relative frequencies. अभी मेरे को बोलो कि ये about 10 समझने के लिए सिर्फ मेरे तरफ देखो. When I say above 50, tell me above 50 how many are there? 10. Now those who are above 50, they are obviously going to be above 40. So above 40, how many people are there? No, above 40, how many people are there? बोलो ना 42. तो फिर ये 40 to 50 के बीच में कितने आएंगे? That will be 42 minus 10. That means whenever they are talking about above or more, that means these are the more than cumulative frequencies. These are the more than cumulative frequencies and take the differences in the upward direction. तो अगर below दिया है तो take the differences in the downward direction and above दिया है तो take the differences in the upward direction. तो फिर अभी मेरे को बोलो कि क्या क्लासेस मेरे को तैयार करना पड़ेगा. Which classes should I make? बोलो ना. Which classes should I make? Come on. I should consider what classes? About 10, about 20. So these classes are going to be 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and 50 to 60. Now what you have to do is, when you are trying to find out the frequencies f, you should start in the upward direction. So above 50 matlab 50 to 60. So such how many students are there? 50 to 60, how many are there? 10. Then above 40 there are 42. But out of them 10 are above 50. So 32 are between 40 and 50.
समझा करो. फिर above 30 how many are there? 70. But 70 में से 42 were above 40. So that difference comes to be what? 88. Then this is going to be 86 minus 70. That is equal to 16. And finally 100 minus 86. That is 40. Now if that is true, tell me capital N is sigma F is equal to what? 100. Now their first question is between 30 and 50. So I say 30 to 50 में कितने होंगे? When you say between 30 to 50, it will be 30 to 40 and plus 40 to 50. But 30 to 40 the number is what? 28. And plus 40 to 50 the number is 32. So these many people, 60 people are going to be 32. ये समझा तुमको? Then tell me below 30 how many will be there? अभी below 30 में कौन कौन आएंगे? Below 30 में कौन कौन आएंगे? 14 plus 16 and that will be equal to 30. समझा ना तुमको? Very popular example and very simple as well. Now my question is, tell me what about relative frequencies? Will be 14 over 100, 16 over 100, 28 over 100, 32 over 100 and 10 over 100. शो क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे के अलावा एग्जाम में कुछ आएगा नहीं. ये मेरा आपको प्रॉमिस. वो पहले भी नहीं आया था, पूरा टाइम में भी नहीं आया था और लास्ट 35 ईयर्स में कभी आया नहीं. Figure can change of course, but whatever is the figure, procedure remains same. फिगर कुछ भी हो, प्रोसीजर वही रहती है. तो आपको क्या देखना है? फिगर नहीं देखना है, आपको प्रोसीजर को याद करना है. आवडपणा करायचा नाही. हो गया क्या? Now I want your attention. Look at me. What happened? Try to know, understand. They are saying about 10. They are saying about 20. They are saying about 30, above 40, above 50. Now one possibility is that the one possibility, ये हो गया ना problem? हाँ, तो फिर one possibility is that the classes could be considered to be 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60 ऐसे हमने consider already किया है. The one possibility is that above 50 मतलब 50 to 60 ये पता नहीं है हमको, शायद 65 भी हो सकता है. Above 50 मतलब 50 to 60 ये कहाँ लिखा है? वो 65 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है. And therefore the one way of writing these classes will be 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and then you will write 50 and above. मतलब आपको ये इसका अपर लिमिट पता नहीं. समझा? Then here this type of classes will be called closed-end classes. Closed-end classes. And these, whenever you don't know the upper limit of the last class or lower limit of the first class, these are open-end classes. These are the open-end classes. So the open-end classes could be like this. Suppose you can also say below 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 and above. This type of classification will be called the open-end classes. ये समझा क्या बाळांनो आपको? These are the open-end. So what happens in open-end classification? You don't know the lower limit of first class. Lower limit of first class. That you don't know. Or upper limit of last class. That you don't know. Then the classification will be referred to as the open-end classes.
this type of classes will be what? Open end classes. So what happens in open end classes? You don't know the lower limit of the first class. You don't know the upper limit of the last class. Below 10 में माइनस भी हो सकता है ना, तुम्हारे फाउंडेशन के मार्क्स माइनस में हो सकते हैं मैथमेटिक्स, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है 0.25. तो अभी तुम्हें एक्सपीरियंस है, तुमको पता है. So classes can be closed end, classes can be open end. So what happens in the open end classes? Tell me. You don't know the lower limit of first class and upper limit of last class. Then these classes will be referred to as what? Open end classes. इसका रेफरेंस आगे आएगा जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन आने वाला है. समझा? Now I want your attention. Look at me. Stay focused. लिखा क्या तुमने? ये ओपन एंड क्लासेस, क्लोज एंड क्लासेस लिखा क्या? हाँ. तो फिर अभी मेरे तरफ देखो. What happens? I consider, suppose, rain in Pune city in last 50 years. I consider marks obtained by you in 10th standard. और marks मैथमेटिक्स में मिले थे 35, साइंस में जरा अच्छे मिले थे 36. तो होता क्या है कि जिंदगी में एक ही थिंग कांस्टेंट है. देयर इज ओनली वन कांस्टेंट थिंग इन द नेचर, एंड द कांस्टेंट थिंग इन द नेचर इज वेरिएशन. कुछ भी कंसिडर करो, वेरिएशन होता है. टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, रेन फ्लक्चुएट होता है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फ्लक्चुएट होता है, इंपोर्ट्स फ्लक्चुएट होता है. इंपोर्ट कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है. एक्सपोर्ट कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है. जब ये ओनियंस का एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, तो उसको अगर वो एक्सपोर्ट ऐसा ही बढ़ता गया, तो यहाँ इंडियन मार्केट में तो वो जो ओनियन है वो महंगे हो जाएंगे. एंड देयरफॉर व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड वाज दे इम्पोज द ड्यूटी ऑफ 40% ओवर द ओनियन, एक्सपोर्ट ऑफ ओनियन. तो एक्सपोर्ट कम हो गया, करेक्ट ना? तो कभी इंपोर्ट बढ़ेगा, कभी इंपोर्ट कम होगा, कभी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कभी एक्सपोर्ट कम होगा. कभी तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे, कभी तुम्हारे मार्क्स कम हो गए. तो ओनली योर मूड ऑल्सो स्विंग्स. कभी तुम्हारा मूड अच्छा होता है, कभी तुम्हारा मूड का ऐसे चिड़चिड़ा होता है. फिर कहा तो whenever there are ups and downs, रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी अच्छा मिलता है, कभी आरबीआई फ्लक्चुएट करता रहता है. फर्दर चैप्टर 7 टेल यू व्हाई डज द आरबीआई इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाई डज द आरबीआई रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट. बट एक थिंग श्योर है कि देर आर वेरिएशंस. कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी खुशी, कभी गम. बट whenever there are fluctuations, I want to know what is the normal value. रेन कभी ज्यादा होगा, कभी इस साल कम हो गया, लास्ट ईयर ज्यादा हो गया था. बट व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू? That normal value is nothing but the measure of central tendency. What is measure of central tendency? Normal value. अभी होता है क्या कि सपोज दिस इज एवरेज रेन ऑफ 50 इंचेस. पुणे में रेन कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, बट नॉर्मल लेवल ऑफ रेन इज अबाउट 50 इंचेस. अभी इस ईयर में, एक ईयर में कंसिडर करूंगा, इस ईयर में ये जो रेन हुआ था वो सपोज हो गया था 55 इंच, और एवरेज तुम्हारा है 50 इंचेस. So tell me how much is the variation in rain for that year? How much is the rain for that year? तो उस ईयर का जो रेन है वो x होगा, और फिर ये एवरेज तुमको पता है is nothing but x bar, that is mean of x, average of x. तो ये x minus x bar, that x minus x bar is the variation. And in this case is 55 minus 50, that is equal to, ठीक है. तो ये वेरिएशन हो गया. अभी इस ईयर में 5 का वेरिएशन था, बट इफ आई कंसिडर द वेरिएशन इन सम अदर ईयर, यहाँ वेरिएशन ज्यादा है. देखो ये हाइट ज्यादा है, यहाँ ये वेरिएशन बहुत कम है. देखो तो ये वेरिएशन भी वेरी होता है. वेरिएशन हुआ है, बट कभी वो वेरिएशन पर्टिकुलर होता है, छोटा सा होता है.
और कभी वो व्हेरिएशन बड़ा होता है, असं असतंच ना, कधी छोटं असतं कधी मोठं असतं व्हेरिएशन. तो आवडपणा करायचा, तो ये वेरिएशन का एवरेज निकालेंगे. So that average of the variation is nothing but the measure of dispersion. What is the average of variation? That is the measure of dispersion. Dispersion, disperse का मतलब क्या? Disperse का मतलब spread. So what is the average spread? तो dispersion अगर कम है तो points will be along the average, very close to average. और डिस्पर्शन अगर ज्यादा है तो दे विल बी स्कैटर्ड अवे, इधर उधर होंगे. जैसे अगर तुम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फ्लक्चुएट होता है, बट 0.5% से इधर उधर होता है. बट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो मिलेगा तो बहुत मिलेगा, और फिर गया तो सब कुछ गया. वेरिएशन बहुत ज्यादा है. तो वेरिएशन जितना ज्यादा होगा उतनी रिस्क भी ज्यादा होती है, क्योंकि मिला तो बहुत मिला, ये ठीक है, लेकिन गया तो सब कुछ गया. समझा ना? वेरिएशन अगर ज्यादा है, रेन नहीं आया तो सब कुछ जल गया, और दबा 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 इतना रेन आया कि सब कुछ बह गया, तो यह रिस्क हो गया. लेकिन थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, दिस इज टॉलरेबल. क्या क्या तुमको? आणि देयरफॉर व्हाट इज द एवरेज वेरिएशन, क्योंकि इस पे एमसीक्यूज है. दैट एवरेज वेरिएशन इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन. समझा क्या बाळांनो? And therefore tell me what is the measure of central tendency. MCQ क्या? So what is the measure of central tendency? That measure of central tendency is the normal value. That measure of central tendency is the normal value. That means it is the central line. That means it is the central value. Measure of central tendency is the normal value, is the average value, it is the central value, it is the central line. Then my question to you is, what is the measure of dispersion? The measure of dispersion, it is the average variation in the data. It is the average variation in the data. Right? Measure of dispersion is the average variation in the data. So if this measure of dispersion is less, tell me what does that mean? Tell me what does that mean? That means the values are close to average. Not exactly average, but close to average. समझा ना? मतलब they are densely spread. The density is more. और इसको समझने के लिए तुम ये ऐसा कर सकते हैं कि ये सेंट्रल लाइन है, पॉइंट्स इधर उधर है, पर ये जो डेंसिटी है वो कम ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, स्प्रेड कम, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन कम है. एंड टेल मी, इन केस इफ आई से मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज मोर, टेल मी व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स द पॉइंट्स आर they are scattered away. They are scattered away from line. They are scattered away from that line. तो मतलब ये अगर सेंट्रल लाइन है, ये पॉइंट इधर उधर ऐसे इधर उधर. क्या क्या बात हो? ये सब एमसीक्यूज है. We are going to solve all the MCQs in the morning. एक MCQ. बाद में तुमको क्या करना है कि वही एमसीक्यूज को दोबारा सॉल्व करो. एक बार हमारा जब डिस्कशन होगा एमसीक्यू, हम रिवीजन कर रहे हैं, बट रिवीजन या रिवीजन नहीं है, हम वापस लर्न नहीं कर रहे, क्योंकि ये तुमको पता ही नहीं था कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन मतलब वेरिएशन. ये तुमको पता था क्या? नहीं पता, क्योंकि तुमको सिखाया ही नहीं गया था. समझा ना?
Anyway, then my question to you is, tell me that in case if the average value is what? Suppose the average price is 10 rupees. Average price is 10 rupees. And today's price is 12 rupees. So tell me, suppose this is X and suppose this is X bar. How much is the variation? That variation is 2. But agar the price is 1 lakh rupees and then today's price is 1 lakh and 2 rupees, how much is the variation? 2. But tell me, is this 2 equal to this 2? Why not? Because this 2 is over 10 and this 2 is over 1 lakh. तो अगर तुम 1 लाख रुपए स्पेंड करना चाहते हो तो उस पे 2 रुपए ज्यादा देने से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, बट 10 रुपीज के ऊपर 2 रुपए ज्यादा देना ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि ये वेरिएशन बहुत ज्यादा है. हे कळलं का बाळांनो? आणि देयरफॉर व्हॉट हॅपन्स, ये है वेरिएशन, बट दिस इज ओवर 10 and this variation of 2 is over 1 lakh, and therefore 2 over 1 lakh is not significant, it is negligible, but 2 rupees over 10 rupees is a significant rise. And therefore what happens, I had a relative measure of dispersion, and relative measure of dispersion, the relative measure of dispersion, that means the coefficient of measure of dispersion, the coefficient of measure of dispersion, that coefficient of measure of dispersion is the variation, means measure of dispersion, over the measure of central tendency, matlab average, and when you multiply it by 100 you will get the percentage. समझा क्या तुमको? ये कंसेप्ट नहीं समझा तो नहीं मानो. समझा क्या नहीं समझा? देखो मेरी तरफ. Suppose you clear your foundation. Suppose you pass in foundation. Suppose you clear your intermediate. And suppose you pass in final as well. And therefore suppose you become a chartered accountant. And therefore you get a good job. And therefore you get a good salary. And therefore you get a good secretary. And in few moments that good secretary becomes your extremely beautiful wife. On an extremely romantic evening, this extremely beautiful wife starts coming close to you. Becomes close to you, close to you, close to you, close to you, very close to you, very, very close to you, and you are excited. Then she gives you a carry bag and says, go to the market and bring the potatoes. Potatoes लेके आओ, आलू लेके आओ, बटाटे लेके आओ. The guy, newly married husband, you cannot say no. So you take that carry bag, go to the vegetable seller. वो बटाटे वाली के पास जाते हो और बोलते हो, तेरे बटाटे कैसे दिए? वो बटाटे वाली बोलती है कि these बटाटे are 10 rupees per kg. तो तुम बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा है, प्राइस बहुत ज्यादा है, नहीं चाहिए मेरे को तेरे बटाटे. मग वो वाइफ तुमको बोलती है कि आते हैं तो मर्सिडीज कार भी लेके आओ मेरे लिए, प्लीज 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 बाय मर्सिडीज फॉर मी. You cannot say no, so you go to the dealer and you ask what is the price of that car, and suppose the price of Mercedes car is rupees 40 lakh. But you don't buy that car. And next day again you go to the market and you ask that potato seller what is the price of potatoes. And the potato seller says that today the price is 15 rupees. Now you go to the dealer. You ask what is the price of car now. And that dealer says today the price of car is rupees 40 lakhs and 5. So tell me how much is the rise in the price of potato? 5.
How much is the rise in the price of car? But tell me, is this 5 equal to that 5? Oh, why not? Because 5 over 10, and if you multiply by 100, then it will come out to be 50%. तो ये जो वेरिएशन हुआ है वो 50% का वेरिएशन हुआ है. प्राइस इंक्रीज हुए बाय व्हाट परसेंट? 50% से प्राइस बढ़ गई है. बट इफ यू फाइंड 5 over 40 lakh multiplied by 100, then you will find that this rise is almost 0%. क्योंकि 40 लाख रुपीस पर 5 रुपीस देना नहीं देना ये कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है. एंड देयरफॉर ये जो 5 हो गया वो हो गया मेजर ऑफ डिस्पर्शन, क्योंकि वो वेरिएशन है. प्राइस बढ़ गया ना, वेरिएशन हो गया. और ये 10 रुपीज जो है वो बेसिक प्राइस है, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर मेजर ऑफ वेरिएशन होता है, डिस्पर्शन होता है. तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 100, दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन. मैंने तो समझा क्या? एंड व्हाई डू वी कंप्यूट दैट? तो फिर अब तुम कंपैरिजन कर सकते हैं ना कि बटाटे और वो कार में क्या वेरिएशन का परसेंटेज है. तो पोटैटो का प्राइस 50% से बढ़ गया, लेकिन कार की प्राइस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है. 40 लाख रुपीज को डीलर भी बोलेगा नहीं कि 5 रुपए देने तो गाड़ी नहीं मिलेगी. समझा क्या? तो इसलिए whenever you have to compare the variations into data sets, what you do is you compute the relative or coefficient of dispersion. Tell me, give answers to my question. Measure of central tendency मतलब what? Average value, normal value. Measure of dispersion means what? Average variation कितना है. And relative measure of dispersion or coefficient of measure of dispersion मतलब क्या? It is the measure of dispersion मतलब variation upon the measure of central tendency मतलब average multiplied by 100. तो ये जो रेशो या परसेंटेज है वो जितना ज़्यादा होगा उतना फिर वो रिस्की होगा, और ये परसेंटेज जितना कम होगा उतना वो कम रिस्क. समझा क्या तुमको? तो देयर आर 3 मेजर्स, एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज व्हाट? नॉर्मल वैल्यू. एमसीक्यू है मॉड्यूल में. व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? नॉर्मल वैल्यू, एवरेज वैल्यू. व्हाट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन? एवरेज वेरिएशन. एंड व्हाट इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन? It is the measure of dispersion over measure of central tendency multiplied by 100, that is percentage value. तो ये measure of coefficient of measure of dispersion क्या indicate करता है? This is the percentage value. This percentage value. ये समझा क्या बाळांनो? Is that clear? Very good. तो फिर अभी मेरे तरफ देखो. Look then at me. हो गया लिख के? Very good. So look at me now. Suppose you go to that potato seller और तुम उसको पूछते हैं कि तेरे बटाटे कैसे दिए, और वो बोलती है कि 10 रुपए से दिए किलो. तुम बोलते हैं 8 रुपए में दे दे, फिर वो बोलती है नहीं देंगी. तुम्हारे बीच में वो क्या होता है? झगड़ा होता है. तुम बोलते हैं 8 रुपए में दे दे, वो बोलती है 10 रुपए दे दे. फिर इवेंचुअली यू मेक अ सेटलमेंट. आफ्टर ऑल दीज negotiations you come to the average price, and that average price is 8 plus 10 and that divided by 2, which is 9 rupees. तो वो बोलती है 9 रुपीज में लेके जा, तुम भी बोलते हैं 9 रुपीज में देके जा. तो ये 9 जो हमने निकाला वो क्या हो गया? अरिथमेटिक मीन. ये 9 जो निकाला हमने वो क्या हो गया? अरिथमेटिक मीन. बट सपोज आई वांट द सेंट्रल वैल्यू, मतलब 50% ऑफ द पीपल आर अबव दिस and 50% of the people are below this. What does it mean? I want your concentration. The other day, last week, I was talking to one of my friends who is the director of IIM Ahmedabad,
And I just asked him what are the new branches in management in MBA, which new branches have emerged. And he told that logistics and supply chain management, artificial intelligence, these are some of the new branches, those are emerged in the field of MBA. Traditionally, the branches were marketing, finance, production, etc. But now he said these new branches are coming up. What is this? Logistics and supply chain. तो ये जो जोमेटो से जो मिलता है वो सप्लाई चेन हो गया, कहीं से कहीं आता है, फिर वहां से यहाँ आता है, वो जो ट्रांसपोर्ट हो गया वो लॉजिस्टिक्स हो गया, और फिर वो तो इवेंचुअली वो कस्टमर के हाथ में जाता है, वो सप्लाई चेन हो गया. तो पॉइंट इज नॉट दैट. पॉइंट इज आई आस्क्ड हिम what are the salaries paid to those who complete MBA in supply chain management, and he gave me an interesting answer. He told me that the median salary is 20 lakh per annum. What is the 20 lakh salary? Median salary. अभी मीन सैलरी नहीं बोला उसने, उसने क्या बोला? मीडियन सैलरी. तो सवाल यह है कि उसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ऐसा हो गया कि 50% ऑफ पीपल आर गेटिंग द सैलरी अबाउ 20 लाख एंड 50% ऑफ पीपल आर गेटिंग द सैलरी बिलो 20 लाख. तो आंसर उन्होंने दिया था वो आपको समझने के लिए इंटरेस्टिंग है. मीडियन सैलरी इज 20 लाख. आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो. दे टॉक लाइक दिस, मीडियन सैलरी इज 20 लाख. वो मीडियन सैलरी इज 20 लाख मतलब क्या? दैट 50% ऑफ द पीपल आर अबाउट 20 लाख एंड 50% ऑफ द पीपल आर गेटिंग बिलो 20. बट देन मैंने उसको ऐसा पूछा कि 50% आर अबाउट 20 लाख, दैट्स ओके, बट अबाउट 20 लाख में मतलब वो 1 करोड़ हो गया तो भी वो अबाउट 20 लाख ही हो गया ना यार. समझा क्या तुमको? तो आई वॉन्ट फर्दर स्लाइसिंग, फर्दर पार्टिशनिंग. देन आई वुड आस्क हिम कि हाउ मेनी पीपल आर अबाउ, और फॉर दैट मैटर 25% पीपल आर बिलो व्हाट. समझा? So 25% people are below what? Then 25% people are below what? That is the first quartile, that is Q1. These are the partition values. Similarly, 25% people will be between Q1 and Q2. 25% people will be between Q2 and Q3 third quartile. And 25% people will be above the third quartile Q3. So there are 3 quartiles which divide the data into 4 equal parts of 25% each. But I go to the deeper level, and then if I ask him 10% people are below what? So what I now have to do is I consider decile 1 D1, decile 2 D2, central decile will be D5, and last decile will be D9. So 10% people will be below D1. वो सैलरी ऐसी होगी D1 सैलरी कि जिसके नीचे 10% पीपल है और जिसके ऊपर 90% पीपल. समझा क्या तुमको? 90% पीपल आर गेटिंग अबाउट दिस सैलरी. दैट विल बी द फर्स्ट डिसाइल, दैट इज D1. Similarly, 10% will be between D1 and D2, and 10% people are getting above this much. So if he tells me that 10% people are getting above the salary of what, 75 lakh rupees per annum, then मेरे को पता है कि 75 लाख जो है वो अमाउंट तो अट्रैक्टिव है, बट उसके ऊपर सिर्फ 10% पीपल है, सो 90% पीपल आर बिलो इट. तो धीरे धीरे तुम मैक्सिमम की तरफ जा रहे हो. अभी और मैक्सिमम की तरफ और मिनिमम की तरफ मेरे को बढ़ना है. तो आई विल आस्क यू, 1% पीपल आर बिलो, and these 1% people will be below what? That will be the first percentile P1, second percentile P2, center में होगा P50 और end में होगा P99. So there are 99 percentile which divide the data into 100 equal parts of 1% each.
तो ये मीडियन is the one figure that divides the data into two equal parts of 50% each. There are three quartiles which divide the data into four equal parts of 25% each. There are 9 deciles which divide the data into 10 equal parts of 10% each. And there are 99%, we'll write it, don't worry. 99% percentage those divide the data into 100 equal parts of 1. तो ये क्या करते हैं कि डेटा का पार्टीशनिंग करते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं. जैसे वो केक के स्लाइसेस तुम करते हैं बर्थडे के समय फिर खाते हैं, वैसे ये डेटा को समझने के लिए सैलरी और कितना स्कोप है, कितनी डिमांड है पर्टिकुलर ब्रांच को, मैंने जो था IIM के डायरेक्टर का, तो इसका मीनिंग ऐसा था कि मेरे को चाहिए था कितने परसेंट के लोगों की सैलरी इसके ऊपर है, कितने परसेंट लोगों की सैलरी इसके नीचे है. तो दीज आर द पार्टीशन वैल्यू. तो वन मीडियन divides the data into two equal parts. Three quartiles divide, we'll write it all later, divide the data into four equal parts. Very well. कभी कभी क्या होता है, समझो तुमने दुकान शुरू किया, चप्पल बेचने का दुकान तुमने शुरू किया. अभी तुम्हारे पास स्टॉक करना पड़ेगा तुमको दुकान में. तो कौन से नंबर, ये भी एमसीक्यू है मॉड्यूल में, कौन से नंबर ऑफ चप्पल का ज्यादा स्टॉक रखेंगे तुम? 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, कौन से नंबर का स्टॉक ज्यादा रखेंगे? व्हाट इज सोल्ड मैक्सिमम, जिसको मैक्सिमम डिमांड है. तो ये जो मैक्सिमम ऑकरेंस होता है, दैट इज नथिंग बट द मोड. दैट इज नथिंग बट व्हाट? मोड. So what is the mode? That is maximum frequency, that is maximum demand. तो ये समझा क्या? अभी जरा मेरे तरफ देखो. And suppose if I tell you, if I consider the speed, tell me speed means what? When you say speed of car is 70 kilometers per hour, what is the meaning of that? It goes 70 kilometers in 1 hour. The car goes 70 kilometers in 1 hour. तो यहाँ होता क्या है कि जब देयर पर स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम. अभी जनरली क्या होता है कि तुम जब जर्नी शुरू करते हो तो तुम ऐसा बोलते हैं क्या कि वी ट्रैवल फॉर 2 hours, वी ट्रैवल फॉर 3 hours, ऐसा बोलते हैं क्या तुम? तो तुम क्या बोलते हैं कि हम पुणे से मुंबई जाएंगे, और पुणे टू मुंबई ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा. क्या रे होगा ना कि तुम कहीं से कहीं तो जाते हो ना, तो वो डिस्टेंस कांस्टेंट होता है. अभी जितना ज्यादा स्पीड से जाएंगे उतने कम समय में पहुंचेंगे, और जितने कम स्पीड से जाएंगे उतना ज्यादा समय लगेगा. तो ये स्पीड के केस में क्या होता है, डिस्टेंस ये कांस्टेंट होता है, ना? और ये जो टाइम है ये वेरिएबल होता है. स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा. तो टाइम वेरी होता है. हम कभी ऐसा नहीं बोलते चलो कार निकालो 2 घंटे जाके आएंगे. हम बोलते हैं चलो कार निकालो 50 किलोमीटर जाएंगे. क्या क्या तुमको बढ़ा दो वो बड़ा की. अभी look at me, that suppose if I consider the prices of different commodities, potato, tomato, onion, meal वगैरह वगैरह, इसकी प्राइसेस टुडेस प्राइसेस और इसकी प्राइसेस बेस ईयर्स प्राइसेस जो हम इंडेक्स नंबर में देखते हैं. तो ये पी नॉट्स मतलब बेस प्राइसेस जो कल थी, प्राइसेस बेस ईयर पास्ट में थी, और आज की प्राइसेस मतलब P1. अभी कमोडिटी टू कमोडिटी बेस प्राइसेस भी वेरी होती है और करंट प्राइसेस भी वेरी होती है. मतलब पोटैटो की प्राइस थी 10 रुपीज बढ़कर हो गई 15 रुपीज,
टोमेटो की प्राइस कल थी 200 रुपीज, आज जरा कम हो गई 198 रुपीज। ओनियन की प्राइस कल थी 50 रुपीज, आज भी रही 50 रुपीज। तो कहीं ना कहीं प्राइस ज्यादा होता है, कभी प्राइस कम होता है। तो लेकिन बेस ईयर की प्राइसेस भी वेरी हो रही है और करंट ईयर की प्राइसेस भी वेरी हो रही है। तो मैंने तुमको अगर बोला कि हाउ मच इज द चेंज इन द प्राइस, तो तुम क्या करते हो कि आज की प्राइसेस P1s डिवाइडेड बाय कल की प्राइसेस P0s, ये रेशो लेते हैं कि नहीं तुम? ना की और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज मिलता है। बताइए मी पोटैटो के प्राइस में कितना राइज हो गया? आज की प्राइस कितनी है? 15। कल की प्राइस कितनी थी? 10। दैट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो गया 150। बट 150 का मतलब क्या है? 50% राइज हो गया। पढ़ा तो समझा क्या तुम? तो यहाँ न्यूमरेटर भी वेरी होता है, डिनोमिनेटर भी वेरी होता है, ना? I'll give you another example. Come on. That suppose if I consider, listen, if I consider that you are going to the tea stall and ask him what is the price of cup of tea, वो बोलता है price of that cup of tea is 10 rupees. Then you ask him how much quantity do you sell, तुम कितने क्वांटिटी को बेचते हो? काय माहिती का, ये कंसेप्ट तुमको समझ गए ना तो ये 20 मार्क्स पक्के होने वाले। ये 20 मार्क्स का चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा कंसेप्चुअली देखो और बाद में फिर नोट्स तेरी वो आसान होगी। वो बोलता है कि आई सेल द क्वांटिटी ऑफ 100 कप्स ऑफ टी एवरी डे। अभी समझो कल उसने ये प्राइसेस को बढ़ा दिया, प्राइस बिकम्स 15 रुपीज, तो क्वांटिटी का क्या होगा? क्वांटिटी का क्या होगा? ज्यादा होगी कि कम होगी? हाँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स में देखा है। तो नाउ ही सेज दैट आई एम सेलिंग ओनली 70 कप्स ऑफ टी। Okay, so tell me how much is the rise in price? How much is the rise in price that you call delta P, that means change in price? Economics का थोड़ा सा reference ले। So how much is the change in price? 5. How much is the change in quantity demanded? Okay, 30. And bug, if this is 1, what is this? That will come out to be 30 divided by 5, 6. ये 6 जो मिला है उसे कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पढ़ना समझा क्या तुमको? दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी। तो यहाँ हो क्या गया कि दिस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस। बट वो क्वांटिटी भी बदलती है, प्राइस भी बदलती है, न्यूमरेटर भी बदलता है, डिनोमिनेटर भी बदलता है। और जब ये दोनों भी बदलते हैं तो वी कंप्यूट व्हाट इज, वी सी दैट हियर बोथ आर चेंजिंग। बट पहले स्पीड के केस में क्या हो गया? डिस्टेंस कांस्टेंट था, टाइम वेरिएबल था, तो न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर वेरिएबल है। और तुम्हारे मार्क्स के बारे में क्या हो गया? 10 स्टैंडर्ड के मैथ्स में मिला 35 आउट ऑफ 100, सोशल साइंसेस में जरा बड़े मिले 50 आउट ऑफ 100। तो यहां क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, 100 में से ही सब मार्क्स है ना, तो न्यूमरेटर इज अ वेरिएबल। When numerator is a variable, denominator is a constant, I find arithmetic mean, मतलब वो 8 plus 10 upon 2. But when numerator is a constant, denominator is a variable, I find harmonic. Which mean do I find? Harmonic. And when both numerator denominator are variables, I find what is called geometric. कब क्या यूज करना है ये भी एमसीक्यू है, समझा क्या तुमको? आणि therefore what happens is that arithmetic mean is used when numerator is a variable, denominator is a constant. Harmonic mean is used when numerator is a constant, denominator is a variable, and the example of that is what? Speed.
स्पीड के बारे में क्या होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है क्योंकि हमारे जर्नी कितना किलोमीटर जाना है ये तय होता है. स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा. आणि देयरफॉर इन केस ऑफ स्पीड वी यू कॉम्प्यूट द हार्मोनिक मीन. और ये 15/10 ये था रेशो. 15/10 ये अपॉन करते हैं तो इसका मतलब होता है रेशो. उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है परसेंटेज. बड़ा हो ना, तो वो बनता है परसेंटेज. और फिर ये प्राइस 1 रुपए से बढ़ी तो क्वांटिटी में क्या फर्क होता है, इसे कहा जाता है रेट ऑफ चेंज. अभी समझो तुम्हारा 18 हो गया ना, नहीं हो 18 ईयर्स हो गए कि नहीं हो गए. अगर हो गए हैं तो तुम तुम्हारे डैडी को बोलेंगे कि मेरे को बाइक दो, क्या है, मेरे को व्हीकल दो. मग डैडी क्या बोलेंगे, ठीक है ते इलेक्ट्रिक स्कूटर घेऊ. तुम होता है नहीं ते मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को वो काय यामा का चाहिए वगैरह पर का. मग डैडी बोलते क्यों, तो तुम बोलते वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को पिकअप ही नहीं है. वो पिकअप नहीं है मीन्स व्हाट, तुम जब उसका एक्सेलरेटर ऐसा पीते हो तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ता है. इट डजंट रीच फास्ट राइट लेवल फास्ट क्विक. वो धीरे 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 स्पीड बढ़ेगा. तो इट टेक्स मोर टाइम टू टेक द पिकअप, मोर टाइम टू टेक द स्पीड. पर अगर तुम ये सोफिस्टिकेटेड मोटरसाइकिल लेते हो तो ये तुम जरा ऐसे करते हो तो स्पीड एकदम दंडकन बढ़ता है 0 to 100. समझा क्या तुमको. तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में स्पीड या 1 सेकंड में स्पीड कितना बढ़ा, दैट यू कॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. दैट मीन्स पिकअप. तो जब तुम पिकअप के बारे में कहते हो तो वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. इलेक्ट्रिक व्हीकल 1 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर का स्पीड बढ़ाएगी. और यही सोफिस्टिकेटेड बाइक है तो 1 सेकंड में झटके से 100 किलोमीटर का स्पीड बढ़ाएगी, म्हणजे पिकअप जास्त. समझा क्या तुमको. तो ये जो पिकअप होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज. अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया तो सेल ऑफ आइसक्रीम कितना बढ़ेगा. हमें पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सेल ऑफ आइसक्रीम बढ़ेगा, पर वो 1 डिग्री से बढ़ेगा तो सेल कितना बढ़ता है. तो दिस व्हेन चेंजेस बाय 1. रेन अगर 1 इंच से बढ़ गया तो क्रॉप कितना बढ़ता है. रेन बढ़ता है तो क्रॉप बढ़ता है. तो ये जब ऐसा रेट ऑफ चेंज मतलब एक के लिए चेंज कितना होता है, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज. तो व्हेनेवर देयर इज अ रेटो, व्हेनेवर देयर इज अ परसेंटेज, whenever there is a rate of change, I use the geometric mean. I use what? Geometric. ये बात ना समझा क्या तुमको. तो अभी at the next point what I am going to write is, at the next point what we shall write is, देखो मेरे तरफ, tell me arithmetic mean x bar है कि नहीं. When do I use it? When do I use it? When numerator is a variable, denominator is a constant. For example, you consider your marks out of 100. Okay? You consider the production per year, the production in 1 year, like that. We use the arithmetic mean. Then we use the arithmetic mean. And tell me ये arithmetic mean x bar का formula क्या है? What is the formula for computing the mean? Take total upon n of x. मतलब सबकी टोटल करो, नंबर से डिवाइड करो तो अरिथमेटिक मीन x बार मिलता है. आनंद हो म्हणा. तो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन x बार का फॉर्मूला, summation x upon n, that means take total upon n of, हो म्हणा ना. Then tell me when do I compute mode? When do I compute mode? बोला.
that is having the maximum frequency. Whenever you want maximum frequency, that will be, yeah, then we will the mode. Over now. Then my question is, tell me median. When do I use the median? Whenever there is one median that divides the data into Ola. Data into two equal parts. Two equal parts. Tell me of what percentage? 50% each. Are they either? Are they udhar? 50% here, 50% udhar. समझा क्या तुमको? Below. About. Then my question is, tell me how many quartiles are there? And therefore what happens is that this is Q1, this is Q2, this is Q3. Then 25% are below this. 25% here, 25% here, 25% here. So there are 3 quartiles. Those divide the data into divide the data into 4 equal parts. Of what percentage? 25% each. समझा बाळांनो? बेसिक कंसेप्ट समझ गए ना, तो कैलकुलेशन विल बी वेरी इजी. अपने को 20 मार्क्स को 100% श्योर करना है. उसमें से एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए. क्या हमें देखना है? थोड़ा टाइम गया तो भी चलेगा. Similarly, my question to you is, tell me how many deciles will be there? D1, D2, center में हो गए D5, last में होगा D9. So there are 9 deciles. Those divide the data into 10 equal parts. Of what percentage? 10 equal parts of 10% each. And then finally, my question to you is, tell me. My question to you is, tell me how many percentiles are there? P1, P2, center में होगा P50, end में होगा P99. Therefore, there are 99 percentiles. There are 99 percentiles. Those divide the data into how many equal parts? 100 equal parts. And 100 equal parts each of what? 1% each. तो ये 1% होगा, ये 1% होगा, फिर इसके आगे ऊपर भी 1%. समझा बहनों? So give the answers फटाफट. How many medians are there? 1. How many quartiles are there? How many deciles are there? And how many percentiles are there? Now my question to you is, tell me, below median what percent people are there? 50. Below Q2 how many percent people, what percent people will be there? Percent. Below D5 क्या होगा? 10, 10, 10, 10, 50%. And below P50 how many will be there? 1, 1, 1, 1, 50 times, so 50%. And therefore we get some more MCQ developed over here. And that MCQ is that what is median is nothing but Q2, is nothing but T5, is nothing but P50. Why? Because 50% data below each of them. We always talk in terms of below. 50% data below median, 50% data below Q2, 50% data below D5. ये सब इक्वल है. और एक MCQ हो गया. समझा क्या तुमको?
Then my question to you is, tell me Q1 is equal to P what? हम ऑलवेज बिलो के बारे में बोलेंगे, तो Q1 के बिलो कितना परसेंट डेटा होता है? 25%। लेकिन अगर वो बिलो 25% है तो फिर यही परसेंटाइल में क्या कहेंगे? P20 आई बिको 25%। समझा क्या बाळांनो? आणि therefore Q1 is nothing but P25. Why? Because 25% data will be below each of them. My question to you is, tell me that P60 is equal to D what? आता धीरे धीरे वो तुमको समझ जाएगा ना, बोलो मेरे को। P60 is equal to D what? हाँ, तो P60 का मतलब है कि 60% data will be below it, or then in terms of decile it will become D6, and therefore P60 will be equal to D6. Why? Because 60% data will be below it. समझा ना तुमको? तो इस तरीके से तुम कौन सी भी इक्वालिटी कर सकते हो। अगर मैंने तुमको बोला कि P75 is equal to Q what? हाँ हाँ, तो P75 will be Q3. Why? Because 75% data will be below each of them. है ना तुमको? ये P75 या फिर Q3 इसके नीचे होगा 75%। Is that clear? Good. तो ये हो गए पार्टीशन वैल्यूज। तो हमने देखा मीन, ओड, मीडियन। Now my question is, tell me when do I use the harmonic mean? That is when numerator is a constant and denominator is a variable. And a classical example of that is what? Speed. Why? Because distance is constant and time is a variable. ये जनरली कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस, जर्नी का डिस्टेंस हमें पता होता है, टाइम वेरी होता है। स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगता है, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगता है। समझा क्या तुमको? और एक इसका एग्जांपल ऐसा है कि यू स्पेंड इक्वल अमाउंट, you spend equal amount in different markets, having different prices. म्हणजे असं कि अगर मैंने तुमको 100 रुपीज दिया और बोला कि कुछ पेंसिल्स लेके आओ, तो पुणे में तुम 100 रुपीज स्पेंड करेंगे वेयर द प्राइस ऑफ दैट पेन इज सपोज 5 रुपीज। मुंबई में 100 रुपीज स्पेंड करेंगे जहां प्राइस होगी 3 रुपए। बेंगलोर में 100 रुपीज स्पेंड करेंगे जहां प्राइस होगी 7 रुपीज। तो हर जगह मिलने वाली क्वांटिटी अलग अलग होगी कि नहीं? बात ना समझा क्या? So I am spending the equal amounts having different prices. Then again what is happening is numerator is a constant and denominator is a variable. So again I would be using the harmonic. Then again I use what? Harmonic. Equal amount. तो क्या बोला मैंने? Equal amount in different markets having different prices. तो प्राइस से अगर तुम अमाउंट को डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी मिलेगा। यार होगा ना कि what is quantity you obtain? That is equal to the amount spent divided by price. ये क्वांटिटी तुमको मिलेगी। तो यहाँ तुमने क्या कहा है कि अमाउंट इज कांस्टेंट और ये प्राइस जो है वो वेरिएबल है। अगेन विच हार्मोनिक। मोमेंट
And then question arises, when do we use the geometric mean? Whenever there is variable over variable. ये generally कब होता है? Whenever there is a ratio, whenever there is a percentage, whenever you are referring to rate of change, I use the geometry. Rate of change मतलब rate of change म्हणजे काय? ये 1 रुपए से बढ़ेगा तो वो कितना बढ़ेगा? टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ गया तो सेल ऑफ आइसक्रीम कितना बढ़ेगा? 1 सेकंड में तुम्हारा स्पीड कितना बढ़ेगा? दैट इज ऑल रेट ऑफ चेंज. क्या क्या तुमको पर चेंज पर 1 यूनिट, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज. हो ना? So what are the measures of central tendency we have to study? Mean, mode, median, quartile, decile, percentile, geometric mean, harmonic. When to use, that is theory, and how to use, that is problem. Formula for using is what? Yeah. तो ये सब calculations हमें करना है for how many types of data? For how many types of data? कितने types of data होता है? रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप. ये कैलकुलेशन करना मतलब ये चैप्टर. तो एक बाजू है कैलकुलेशन का पार्ट और एक बाजू है थ्योरी का पार्ट. तो हम इसका भी कलेक्शन करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये थ्योरी का भी कलेक्शन करेंगे. और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं. मार्क्स का समझा क्या तुमको? 20 मार्क्स का इम्पोर्टेंस समझो. और ऐसे कुछ चैप्टर शुरू में अगर तुम ज़्यादा वेटेज वाले कवर करेंगे तो देखते ही देखते, आई प्रॉमिस टू यू इज बाय ऑलमोस्ट सितंबर एंड यू विल बी इन अ पोजीशन ऑफ गेटिंग 50 मार्क्स. तो 50 मार्क्स का अगर तुम सॉल्व करेंगे तो 42 और फिर 15 अक्टूबर तक रुकेंगे तो और फिर जो जितना डेफिसिट रह सकता है ना मेकअप करेंगे. दिस हाउ यू आर गोइंग टू पास. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, वो जून का रिजल्ट लगने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था कि सर तुमने जो कहा था वो मैंने किया. मैंने सिर्फ 65 मार्क्स का प्रिपरेशन किया था और 64 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, 64 मार्क्स मिल गया. समझा क्या? तो 100 आउट ऑफ 100 मिलाने के चक्कर में 64 मिलता है तो तुमको दुख होगा ना. और 64 ही सॉल्व किया और 64 ही मिल गया तो तुम डांस करने लगेंगे. समझा क्या तुमको? तो ये थोड़ा सा ना एक ऐसा पॉलिसी डिसाइड करो, स्ट्रेटेजी डिसाइड करो. हर सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैथ्स की जिम्मेदारी मेरे पे दे दो. लेकिन हर सब्जेक्ट में तुम क्या करो, ज़्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर्स है पहले सिलेक्ट करो, उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो. जब तक 70 मार्क्स का नहीं होता, 65 to 70, तब तक बहुत सारी मेहनत करो. और फिर एक बार वो हो गए तो तुम फेल नहीं होने वाले. फिर आगे के 30 मार्क्स भी आसान होंगे. कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो आगे के 30 मार्क्स भी आसान होने वाले हैं. नहीं तो फिर वो भी 70 मार्क्स भी मुश्किल होते. समझा क्या? तो ऐसा एक काम करो, आज के दिन में हर सब्जेक्ट का वो मॉड्यूल निकालो. ICIO.org पर तुम्हें वेटेज दिया है सबका. तो ऐसे चैप्टर्स की लिस्ट करो कि जो तुम्हें 65-70 मार्क्स दे सकती है. समझा क्या? और उन चैप्टर्स का प्रिपरेशन. समझा? ठीक है. तो विल कंटिन्यू विद द फॉर्मूला एंड कैलकुलेशंस ऑफ ऑल दिस इन टुमारोज लेक्चर. मजा आता है कि नहीं?